Start with the derivations of rotational dynamics. Okay, that is आपका NCERT book में तो ये combined है, मतलब rotational dynamics, and then you have this thing, center of mass, moment of inertia, then system of particles. सब कुछ आपको combined दिया हुआ है NCERT, so we'll follow that method only. ठीक है, इसको हम rotational motion कहते हैं, जिसका हम अभी सभी डेरिवेशन देखेंगे. Okay. For rotational motion, the first derivation is relation between tau and L. What is tau? Tau is torque. And what is L? L is angular momentum. So the relation between tau and L. See, whenever you have such relations, आप एक काम करो, पहले कोई एक क्वांटिटी को देखो, ठीक है? दे रहा हूँ मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, 1 मिनट है. अभी दिखाई दे रहा है? ओके. इन सच केसेस कोई एक क्वांटिटी को आप देखो और उसको आप आपका लीनियर एनालॉग या आपका ट्रांसलेटरी एनालॉग जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट एनालॉग उसके हिसाब से देखो. फॉर इंस्टेंस टाउ इज नथिंग बट फोर्स. ओके, इट इज एनालॉग ऑफ फोर्स, नॉट force, actually it's the analog of force, and we know that force is equal to, in terms of L, L का analog क्या है? P, and force is equal to dP by dt. Therefore tau is also equal to dP by dt. Now we need to prove it in this relation. कैसे prove करेंगे हम? Okay, we know that tau is equal to force into R is equal to mass into acceleration into R is equal to, अब इसको आपको मोमेंटम के साथ लिखना पड़ेगा. सो लेट अस स्प्लिट a. सो a को हम लिख सकते हैं dv by dt. सो m into dv by dt, या आप एक्सीलरेशन को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर लिख सकते हो आप. दैट विल बी r ओमेगा r ओमेगा नहीं आ रहा अल्फा. सो दैट इज m r स्क्वायर अल्फा, दैट इज mr square alpha. Now there is a problem. This will be I alpha. That is also equal to tau. Not a problem. पर आपको L के साथ रिलेशन पूछा हुआ है. Let us take L and try this. ये भी एक रिलेशन है, ठीक है? This is tau and I का रिलेशन. नोट करो इसको. For tau and L, let us now take L. So we know that dl by dt is equal to, L क्या है? That is P into R, that is dP by dt times R. हाँ, यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. That is equal to tau नहीं, force on R, that is equal to tau. यहाँ से आपको, okay? ऐसे भी आप लिख सकते हो. There is one more way of this relation, that is L is equal to PR dl by dt equals dP by dt R plus R dP by dt. यहाँ से dP by dt is nothing but, इसको मैं लिख सकता हूँ dP by dt. okay, that is force. dP नहीं आएगा, यहाँ पे dr by dt आएगा और यहाँ पे p आएगा. That will be displacement. Okay, and this is velocity p plus यहाँ पे क्या आएगा r force. This r and force, this will give you what? This will give you torque. Velocity into moment, that is velocity into momentum. Velocity into momentum आपको कुछ नहीं देगा. So this quantity gets cancelled off, you get torque. So that is dl by dt is equal to torque. Okay, ऐसे भी आप लिख सकते हैं different ways. थर्ड डेरिवेशन देखते हैं अभी हम. कंजर्वेशन ऑफ टाउ और कंजर्वेशन ऑफ एल पहले लिखो. सो कंजर्वेशन ऑफ एल मींस इफ टाउ इक्वल्स 0 देन dl by dt equals 0, so L is constant. This is conservation of L. Next, translational equilibrium. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब
there is no rotational equilibrium, there is translation equilibrium. That is, force is equal to 0, dp by dt is equal to 0, p is constant, then it is translational equilibrium. For rotational equilibrium, tau, this is fifth derivation, tau equals 0, so dl by dt equals 0 or L equals constant. Okay. Now इसके बाद आपको लिवर का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, वो लिवर प्रिंसिपल. So for liver principle, we'll simply use these two relations. ठीक है. So at translation equilibrium, dp by dt equals 0. At rotation equilibrium, dl by dt equals 0. And then you have one more relation, that is p is constant and L is constant. For the liver, structure of the liver आप नोट करो, इधर लिख रहा हूँ मैं. यहाँ पे आपका फल्क्रम आएगा. Then you have the arm. Let this be the load arm. Let this be the effort arm. Okay. So this is your load, and this is your effort. Okay. Then I can say L equals P. Okay. What is L? PR. या आप ऐसे भी लिख सकते हो. Tau equals force equals 0. That is the same. Rotational and translational equilibrium. So all these are 0. Tau is what? Tau is force R. Okay. Equals force क्या है? Mass into acceleration. या गाना आप इसको एक और तरह से लिख सकते हो, I guess. अब ऐसे लिखो इसको. Call this tau1 in this direction and tau2 in upper direction. ऐसा रोटेट हो रहा है ये ऐसा. Okay, it's rotating like that. So tau1, tau2. So tau1 is equal to f r1, tau2 equals f r2, and both are equal to 0 because tau is 0. It is in rotational equilibrium. So f r1 equals f1 r1 equals f2 r2. So ये आपका प्रिंसिपल हुआ. I'll give you access, just hold on. थोड़ा पेशेंस रखोगे तो एक्सेस सभी को मिलेगा. You're getting the access now? Good. Okay, इसमें कोई डाउट है? Lever principle. Okay, next is center of gravity. We're supposed to show when and to what the center of gravity coincide. ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा. Prove that center of gravity coincides at center of mass. Okay. For summation RI MI equals 0. या आपको पूछेगा when does the center of gravity coincide with center of mass. So for that we will write center of gravity के लिए हमको पता है tau equals 0. Only that it will be in center of gravity. That is summation, that is, or in other words tau I equals 0, or summation Fi Ri equals 0. If summation Fi Ri equals 0, then summation Fi R plus summation Ri equals 0. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. Otherwise you can write it as summation Fi के बदले में आप ऐसे लिखो इसको. This be summation Fi Ri equals 0. Summation Ri M Ai equals 0. Summation Ri M R omega I equals 0. Summation ऐसा नहीं चाहिए. मिनिमम डिस्टर्ब यहाँ तक पहले कॉपी करो. So summation Ri M Gi equals 0. So summation Ri Gi M equals 0. Now G is not equal to 0. So summation Ri Mi equals 0. So when summation Ri Mi equals 0, tau equals 0, and center of mass coincides with center of gravity. No.
The next question is kinetic energy notation. Energy kinetic equals half mv square equals half m r omega square equals half m इसको आप दिस इज द राइट मेथड टू प्रूव इट. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ एम आर. ये आर ओमेगा क्या है? ये आर ओमेगा इज नथिंग बट आर open the squares. Okay, so I get r square omega square, that is half I omega square, and this is energy kinetic. Once again it is similar ना. यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम. एनालॉग्स को भूलो मत. And what is radius of gyration? ये आपका 7th था, ये 8th. What is radius of gyration? Radius of gyration is given by, पहले तो इसको लिखो आप, I is equal to summation, क्या है ये, mi ri square equals mi r m1 r1 square plus m2 r2 square so on, which is equal to, now let m1 is equal to m2 equals mn equals m. Okay, then I'll get m ri square, that is r1 plus r2 plus r3 square so on until rn square. Now इसको आप multiply and divide by n, that is number of particles. So n से multiply करो और n से divide करो. So I'll get capital M, that is total mass, और ये पूरा जो टर्म है, okay, that is this term. Okay, इसको मैं कहता हूँ as radius of gyration. ठीक है, and radius of gyration is given by r1 square plus r2 square plus rn square upon n. ठीक है, simple बात है. So here it will be mass into radius of gyration. And what is this? This is my I. इसका पूरा स्क्वायर भी ले लो आप. Remove the squares. Parallel axis, perpendicular axis theorem आप कर सकते हो ही. Next we'll go for relation between torque and I, moment of inertia. ये हमने किया है ना अभी अभी, पहले वाला हमने इसी को किया था एक्चुअली. That is torque is equal to fr square. fr square नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, fr is equal to m a r is equal to m alpha r r, that is equal to m alpha r square, that is equal to m r square alpha, that is equal to I. This is your, ये आपका 10th वाला, ये हमने पहले ही किया था. 11th one is, or rather 12th one is relation between L and I. यहाँ पे बस आपको रिलेशन वाले ही पूछेंगे, तो इस पे आप थर्ड है ना. This is the 12th derivation, relation between L and I. Okay. Now L is equal to, wait, mass, आपको मास पूछा हुआ है. आपको यहाँ पे देखो एनालॉग ऑफ मास इज गिवन, एनालॉग ऑफ मोमेंटम इज गिवन, एम वी. अच्छा आप एल को ही स्टार्ट करो, एल से स्टार्ट करोगे, इट विल बी इजियर, इट विल बी इजियर. तो टेक एज पी आर इज इक्वल टू एम वी आर equals m r omega r equals m r square omega equals I. Okay. Now the next relation is between
और द कंजर्वेशन ऑफ एल हमने किया है. देन पावर. Okay, for power we know that power is equal to work done by time is equal to, हमने अभी वर्क डन के लिए हमने एक इक्वेशन मारा था, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन टाइम. एंड व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ऐसा लिखोगे आप या आप ऐसा डायरेक्टली लिखो. वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन इज force into displacement upon time equals tau into theta upon time equals tau. No, that is power. Okay, so that's a very small set of derivations. हालांकि यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, 14 derivations है, काफ़ी छोटे छोटे derivations, अब एक साथ हो जाएगा सब कुछ. Now we'll do with gravitation next video में. Thank you.